वन बाय वन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह के क्वेश्चंस टेस्ट में रहे एंड हाउ दिस कैन बी अटेम्प्टेड, कैसे इसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस सीट अगेन. ओके, नाउ तो very first question, this test was on, as you know, basic concept of public administration and principle and theories of organizations, and organized on the day 28th of December 2024. Let us discuss the question. और उस टेस्ट में टोटल 18 क्वेश्चन बने. जो हमारे 12 क्वेश्चन थे वो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे, कीपिंग द लास्ट ईयर पैटर्न ऑफ OCS Mains एग्जामिनेशन. दिस वाज बेस्ड ऑन UPSC पैटर्न एज वेल. तो सारे पैटर्न्स को एक साथ मिला के ये टेस्ट बना था एंड दिस विल बी फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज the study of public administration concerned with what and how of government administration explain. देखो, this topic is related with the definition, introduction of public administration. You know, public administration, the term used to refer two things. Administration दो चीजों के लिए यूज किया जाता है. The first, practice of administration, and second one is study of administration. Study. तो as being civil servant, career bureaucrats, तो जो हमारे civil servant हैं, they are practicing public administration, they are implementing the law, rule, policy. While as being a student, we are doing a study of public administration. तो यहाँ पर इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं हमारे मार्शल डिमार्क और कहते हैं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स व्हाट एंड हाउ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अर्लियर डेफिनेशन यू नो वेरी वेल, फॉरवर्डेड बाय डिफरेंट स्कॉलर, अलग अलग लोगों ने अलग कहा. वुडरो विल्सन सेज दैट इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, सम से इट इज द मैटर ऑफ द मैनेजरियल ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन मार्शल डिमार्क कहते हैं कि ये व्हाट एंड हाउ से रिलेटेड है. पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, देयर आफ्टर वी विल रीड द मॉडल आंसर, वी कवर मॉडल आंसर. कि देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आखिर किस चीज को पढ़ता है, किसको एक्सप्लेन करता है. वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट. व्हाट मीन्स हाउ एंड व्हाई. द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड कराती है, तो एजुकेशन है, हेल्थ बेनिफिट्स है, सिक्योरिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है. तो दैट इज द कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड इन शॉर्ट व्हाट. इसी को सब्जेक्ट मैटर कहते हैं. लेकिन हाउ कैन एजुकेशन विल बी सर्व टू पीपल, कैसे ये पढ़ा लोगों तक एजुकेशन पहुंचेगा, कैसे हम हेल्थ सर्विसेज, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पाएंगे. तो दैट इज द technical aspect of administration. So this can be offered through well-designed structure, that is hierarchical structure, that can be channelized through well-trained officer. बहुत अच्छे officers trained होंगे तभी education देंगे, teachers trained होंगे तभी आएगा. That can be channelized with resources. अब अगर स्कूल के लिए स्कूल है ही नहीं तो कैसे ये पहुंचेगा. So the fact is that public administration deals with both aspect, what and how. क्या करना है और कैसे करना है, इस दोनों चीजों को इन्वॉल्व करता है. This was the interest, this was the findings of Marshall Demark. अब आंसर कैसे करना है, तो फर्स्ट वी नीड टू इंट्रोड्यूस दिस इन द वे कि भाई इसमें आपको थिंकर के नाम डालने ही पड़ेंगे. अगर आप नहीं रख रहे हो तो इट मीन्स यू आर वीक in public administration. Most of the thinker you should keep in mind their keywords. जिसने भी कहा है और जिस पर बार बार क्वेश्चन बनते हैं उसको तो रखना ही है. तो दिमाग में ये रखें कि थिंकर्स के नाम को as much as possible you should write there. और वहां पे इसको रखना है कि मार्शल डिमार्क has identified the dual nature of public administration with the term what and how. या तो ये हो सकता है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑब्जर्व्ड बाय मार्शल डिमार्क बोथ व्हाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन.
It deals with the theoretical and the practical aspects of government function. Thereafter, break your question into two parts. सीधा सीधा ब्रेक करो, पहले में आओ what in public administration. To what refers subject matter, content of government administration. Government administration is for public well-being, people well-being that involves policy, program, goals, including with health, education. This way, you can even draw here this type of chart as well. कि what के लिए आप ऐसा एक chart भी यहाँ पे बना सकते हो, health, education इनको लिखते हुए, security, infrastructure, well-being, ऐसे, even other services, कम्युनिकेशन लाइक, तो ऐसे उसको ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलिसी सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेलफेयर स्कीम, दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट. हाउ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हाउ रेफर्स द टेक्निकल नॉलेज मेथड. दीज आर, अब टेक्निकल नॉलेज and method are here. What are the method? So in short, always keep in mind the idea forwarded by the Luther Gulick and Urvik, that is post-core. So implementation of education policy require a very well-designed plan, organization, staff, even direction, command, control. So these are the post-core was the key techniques implementing the policy, making policy real. So that is the way here you should write this principle. Again, you can write efficiency, accountability, transparency as well. Now just involve the correlation between the principle and the objective. So there is an intricate relation. If our goal is well determined and our techniques are well defined, both are quite suppose combined together, only then there will be result. Otherwise we must not achieve the result. So goal and objective both shall be harmonized in the way that will play an effective role. So this was the finding of Marshall E. Remark, and both are interconnected. Effective administration require the understanding of the techniques. So this was the finding of the Marshall E. Remark, and this way you may write in conclusion, public administration is the combination of both what and how. What outlines objective while how ensure effective implementation. So this was the first question. As far as second question is concerned, so this is what are the main difference between public and private administration? How do these affect decision making and accountability? तो आप जानते हो कि the public administration and private administration, difference between both has been the concern of our early scholar, even our early scholar like Henry Fayol, even Taylor, even other classical theorist says that the administrating theory are equally applicable to the private and public administration, so need not to be make differences out of this. इसमें difference करने की कोई जरूरत नहीं है, सब एक ही है. So this was the earlier approach. Later who came? So Sir Josiah Stamp, Herbert Simon came, Paul Appleby came. They highlighted no, the earlier scholar were quite unknown about the intention of public administration. Public administration is for people well-being. Private administration is for profit making. Public administration carry out their operation under supervision of political leader. They are accountable for the political leaders. तो बहुत सारे differences को identify किया बहुत सारे thinkers. आमतौर पे हमें ये ध्यान रखना है कि in public administration as being a theory, you need to involve the name of thinker as much as possible. सारे देने पड़ेंगे. तो पहले तो एक इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर ऑब्जेक्ट
objective, scope, accountability, and even decision making process. Thinkers like Paul Appleby, Josias, Stamp, Herbert Simon have explored these distinctions. अब नाउ फर्स्ट पार्ट इज मेन डिफरेंसेस, आखिर डिफरेंस क्या क्या आ रहा है. तो टेकिंग ऑल सच थिंकर इन माइंड वी शैल हाईलाइट द पॉइंट. पहला एम को ले लेते हैं. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर पब्लिक गुड्स, पब्लिक वेल बीइंग. Our administration is working to provide to ensure health, education, justice in society. Objective of these administration is to maintain equality, freedom, fraternity, all such things. So that Appleby has rightly emphasized the politically driven. Whatever the objective of political leader, public administration do so. As far as private administration is concerned, so that is driven by profit maximization. इसका पर्पस है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे. रिलायंस इज प्रोवाइडिंग यू जियो सर्विसेज नॉट फॉर योर सर्विस, नॉट फॉर योर वेल बीइंग, रेदर फॉर मेकिंग प्रॉफिट. तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, कैपिटलाइज देयर इन्वेस्टमेंट. तो यही पर्पस होता है. तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट. एज फार एज स्कोप इज कंसर्न, मीन्स एरिया ऑफ कंसर्न, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is associated with all aspect of life, all possible aspect. मतलब या तो ये वाटर है, सैनिटेशन है, हाउस है, हर चीज यहाँ पे आ रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. बट एज फार एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, देयर एरिया ऑफ कंसर्न इज स्कोप इज क्वाइट लिमिटेड. They are associated with their customer, their employee, their organization. Mainly subjects are limited. Some company are प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट, सर्विंग पीपल इन अ वेरी डिफाइंड एरिया. तो उनके काम कम है. यहाँ पे देखो पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करने हैं, इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने हैं. तो दैट इज द प्रॉब्लम हियर. अगेन एज फार एज द वर्क कल्चर इज कंसर्न, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन फॉर ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर दैट इज क्वाइट लेंदी, कम्बरसम, बहुत डिले होता है. लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नोन फॉर एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, फाइनेंशियल रिटर्न. दैट इज अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अकाउंटेबल to government. You know very well during question hour, opposition party leader may ask, railway minister, why train is running late, sir? So that is questionable. But for private administration that is not true. उससे कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई क्या हो रहा है. This is answerable for their stakeholder. So this is the main difference you shall highlight, referring the thinkers as well. अब आओ कि इसके डिसीजन मेकिंग पर क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है. तो डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी, तो पहले हमें हाई टारगेट करना है डिसीजन मेकिंग, कि हाउ डिसीजन मेकिंग इज गोइंग ऑन विथ पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ड्यू टू दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, स्टेक होल्डर्स, इवन थर्ड पार्टी, डिसीजंस आर वेरी स्लो. Decision making practice is very slow. Involvement of multiple bureaucratic levels, again legal checks, influences. While private administration as far as concerned, so they can take prompt decision, prompt and quick decision they may do so. Reason being, very fast decision they may make. Reason being, they need not to consult political leader, even judges, even the stakeholder. They may do so. They are actually, their functions are quite effective, quite paperless, so they can do so. So that is the decision making. Again, as far as accountability is concerned, so public administration is highly accountable. Public administration and administration are accountable for wide range of stakeholder, including public, political leader, civil societies, even the judiciary, even political leader. बहुत सारे लोगों को इसको आंसर देना पड़ता है. If suppose, for example, a real accident occur, so there will be a question against before the public administrator कि भाई ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, लोगों को कॉम्पनसेट करना है, पॉलिटिकल लीडर में आस्क क्वेश्चन. तो ऐसे होता है. लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इतने लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है. दे आर मेनली अकाउंटेबल टू देयर कंज्यूमर्स, दे आर मेनली अकाउंटेबल टू द
beneficiaries. So that is the limit of accountability with private administration. In conclusion, you may uh, bind all such things कि public administration and private administration are two species of the administrative administration. Their objectives for accountability, however, sort of sort of management functions are being practiced by both. तो ऐसे हमको करना पड़ेगा, आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब next question, public administration horizon scope have been expanding to cater the complex need of citizen in globalized era. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, बात यहाँ पे सब्जेक्ट की हो रही है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट ओवर एंड ओवर एक्सपेंड कर रहा है, ये चेंज होता जा रहा है। देखो आप अपने सिलेबस को ही देखो, यू विल गेट द आइडिया कि नाउ अ डेज डिजास्टर मैनेजमेंट बिकम द पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अ डेज with disaster management, information communication technology become the syllabus of public administration. Public private partnership become the syllabus of public administration. Citizen charter become the part of public administration. RTI is part of public administration. तो what is going on? आखिर क्या चल रहा है ग्लोबलाइज इरा में, क्यों पीपीपी की बात हो रही है, सब हो रहा है। So as a subject, this evolved to sort out the problem faced by the public administrators. एडमिनिस्ट्रेटर के सामने में चेंजिंग वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज हियर टू सॉल्व ऑल सच प्रॉब्लम्स। दैट इज काइंड ऑफ डिस्कशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग ऑन। तो यहाँ आपको सबसे पहले इसको आपको एक बताना पड़ेगा कि during globalization era what change is taking place. So in the age of globalization, scope of public administration has changed. Public administration is no longer confined to traditional governments. Rather, with increasing complexity of citizen needs, change in technology, challenges posed by the globalization, the scope of public administration has broadened over the time. अब इन सभी चीजों को आपको वन बाय वन लिखना है। पहला ग्लोबलाइजेशन। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन नंबर ऑफ चैलेंजेस इमर्ज्ड इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कल्चरल इंटीग्रेशन, एनवायरमेंटल, these are these are these are these are these are so these are the rising issue including with climate change, international trade, regulation, migration, immigration, so that public administration now providing solution for these problems. Technology and e-governance as far as concerned, so technology has opened the door for modern administration. Now दिस हैज इसने जो है बहुत सारी फैसिलिटीज को दिया है। पेपरलेस गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, स्मार्ट गवर्नमेंट, टेक्नोक्रेट्स, ऑल सच थिंग shall enhance the efficiency and competence of public administration and service delivery may be more efficient to the administration. तो अब यहाँ पे इसी की बात हमें करनी है कि how these becomes the integral part of administration. Now, what change took place at citizen front? तो citizen के सामने देखो, now we are aware with the services provided by American administration, provided by French administration. Now even our media highlighting the issues of our administration कि भाई दूसरे जगह पे तो ऐसे सर्विस है। तो now expectation increased. Now they are feeling that they are being offered with the low grade services. So it is the duty of public administration to make citizens satisfied. अब ये कैसे satisfied होगा? तो with transparency, accountability, participatory approach, all such things will be handled properly. Again, अब यहीं पे पॉलिसी गवर्नेंस की भी बात आ रही है कि लोकल एंड पॉलिसी गवर्नेंस coordination among that becomes fundamental. Only then we can handle pandemic, terrorism and climate related issue. We need to be very uh,
मतलब उसके साथ चलना पड़ेगा जो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। लोकल गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि विथ राइजिंग ग्लोबलाइजेशन व्हाट हैपेंस, तो पीपल आर लुकिंग फॉर मोर पावर, मोर सर्विसेज, बेटर गवर्नेंस, एंड दैट कैन ओनली बी हैपन इफ पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड एट ग्रास रूट लेवल। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नए नए टॉपिक आ रहे हैं। इवन यू कैन ऐड हियर सिटीजन चार्टर, आरटीआई लाइक कॉन्सेप्ट एज वेल। और उसके बाद हमें कंक्लूड करना है कि दिस इज द वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेंडिंग देयर स्पेस विथ द चेंजिंग changing environment of changing environment with globalization। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी और डिमांड को करते हुए पॉइंट्स वाइज यहाँ पे चीजों को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्पेन ऑफ कंट्रोल, एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग द स्पेन ऑफ कंट्रोल। अब व्हाट इज स्पेन ऑफ कंट्रोल? तो यू नो स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर्स नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सपोज दिस इज सीईओ, तो सीईओ may supervise only limited number of subordinate A, B, C or D, maximum 4, 5, that will be the enough. Now this theory, this theory was predominant, one of the popular theory among the classical scholar like the Henry Fayol, even Mune Rayleigh, even our Luther Gulick attempted to solve this problem span of control. Very notable contribution were made by V.A. Gracunas. V.A. Gracunas says that a span of control is not so easy as it appears. Rather, it is very complex. Being reason, कि क्या रीजन है कि देखो, with increasing employee, a relationship between the employee and the supervisor changes जियोमेट्रिकली। मतलब ए को बी से बात करनी है, बी को इस एक्स से बात करनी होगी, ए एक्स से बात करेगा, सी भी एक्स से बात करेगा। अब एक्स ए के थ्रू बी से बात करेगा, बी के थ्रू सी से बात करेगा, तो देयर विल बी द जियोमेट्रिकल proportion of relationship if we add employee under a single supervisor। तो इसकी थ्योरी बहुत पॉपुलर रही है। जब भी आप स्पैन ऑफ कंट्रोल रखो, आप वीए ग्रेकुनास को नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब यू आर मिसिंग द कोर एस्पेक्ट। तो वी शैल फर्स्ट ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू पार्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ span of control or factor affecting the span of control। टू क्लियर डायमेंशन इज हियर। पहले आपको बताना है कॉन्सेप्ट, तो इंट्रोडक्शन लेना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टली सुपरवाइजेस। कितने आदमी को वो कर सकता है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइनिंग इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड कॉम्पिटेंस। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ वीए ग्रोकुनास। तो वीए ग्राइकुनास, a French management consultant, attempted to explore the concept of span of control. He says supervisor can only effectively manage few subordinates, that will be 5 or 6 enough. With increasing number of subordinate, relationship with manager with subordinates increases जियोमेट्रिकली। मतलब कई सारे रिलेशन बनने लगते हैं, 2:2, 2:2 प्रोपोर्शनेट हो जाने लगता है। और ये कहता है कि देयर इज अ फॉर्मूला दैट कैन डिटरमाइन द रिलेशनशिप आउट ऑफ द इंक्रीजिंग स्टाफ। क्या फॉर्मूला हो सकता है, कितने रिलेशन आएंगे? इफ यू आर मेमोराइजिंग दिस विल बी योर एज। आर प्लस आर मीन्स रिलेशनशिप इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय is to 2 to the power number of employee but by 2 plus number of employee minus 1। This was the formula given by V.A. Gracunas। अगर इसमें हम प्लेस करें इस फॉर्मूले को, तो अगर हमारे नीचे एक सबऑर्डिनेट होंगे, एक रिलेशन बनेगा, 5 सबऑर्डिनेट होंगे, 100 रिलेशन बन जाएगा। इफ वी सॉल्व दिस विल बी शेयर्ड विथ यू, आपके साथ ये रहेगा, इसको थोड़ा सा देखोगे समझ में आ जाएगा। तो रिलेशनशिप किस तरह से बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन दिख रहा है। तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अ सीईओ टू मैनेज 100 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली द रिलेशनशिप कैन बी मैनेज्ड बाय सीईओ प्ले अ वाइटल रोल। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल से द मिनिमम
5 to 6 employee shall be maximum 5 to 6 employees shall be managed properly by the management. Beyond this number, that will be very difficult for a management. So this was the formula, this was the concept of span of control you supposed to explain here. अगेन नाउ फैक्टर. अब देखो फैक्टर बहुत सारे हैं. यू नो वेरी वेल नेचर ऑफ वर्क. अगर नेचर ऑफ वर्क रूटीन होंगे दैट एक्सपेंड आवर स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि भाई सेम टाइप के काम करने हैं. स्किल लेवल, इफ आवर एम्प्लॉय आर क्वाइट स्किल्ड, तो मैनेजर कैन हैंडल मोर देन 5 6 7 स्टाफ. इफ मैनेजर इज एक्सपर्ट, कैन चेक द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाफ. टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, सीसीटीवी लगा दो हर जगह पे, उनके बीच का जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है यू कैन आइडेंटिफाई. ज्योग्राफिकल स्प्रेड, अगर सारे जो हमारे हेडक्वार्टर हैं उसी के आसपास अगर हमारे सारे ब्रांचेस ऑफिस हो तो दिस विल बी क्वाइट इजी टू कंट्रोल. अगेन सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. तो अगर सेंट्रलाइजेशन होगी तो नैरोअर स्पैन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा स्पैन बढ़ेगा. पर्सनालिटी ऑफ सुपीरियर, इफ सुपीरियर इज हम्बल, क्वाइट वाइज, इन दैट केस कंट्रोल मेनी स्टाफ. ये चीजें ध्यान रखनी है. These are the factor, and last conclude this point कि critical determinant of effective management. ठीक है. Now next question was, to what extent does the delegation of authority in organization impact motivation and the organization outcome? तो पहले हमें समझना है कि what is delegation. तो you need to refer us delegation. डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज ये हमारे सीईओ है, टाटा साहब है या अंबानी साहब है. अंबानी साहब ने अपने किसी मैनेजर को सपोज ये कहा कि जाओ और आप रिलायंस जो हमारा डिजिटल है इसको आप संभालो. तो रिलायंस डिजिटल विल बी मैनेज्ड बाय पर्सन बी. पर्सन बी विल एंजॉय 100 whatever the freedom granted by this person A. That is called delegation. If Reliance Digital will fail, so Ambani will be the responsible person. This must not be. So that is kind of delegation, means functional responsibility are being shared with the subordinate. इसी को कहते हैं हम लोग डेलीगेशन. अब आओ कि डेलीगेशन से हो क्या रहा है. तो फर्स्ट वी नीड टू राइट हियर इंट्रोडक्शन कि डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इन्वॉल्व्स इंटरेस्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय. इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स मोटिवेशन एंड ऑल सच. अब मोटिवेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो मोटिवेशन पे देखो, जैसे ही इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आई विल बी द केयर टेकर ऑफ रिलायंस डिजिटल, तो इन दैट केस दिस विल एंजॉय वेरी हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ऑनरशिप का सेंस आएगा और कुल मिला के ये बहुत ज्यादा काम करने पे लगेगा. अगर इसको सपोज कि कंप्यूटर नहीं आ रहा है, इसको मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, दिस में डेवलप दैट स्ट्रेंथ टू रन फॉर रनिंग ऑर्गेनाइजेशन. अगेन इसको जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, एंड यू नो जॉब सेटिस्फैक्शन इज द फंडामेंटल ऑफ मोटिवेशन. तो यहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन की, भाई हमने काम किया है, हमें एक चैलेंजिंग जॉब मिल रहा है. ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आउटकम होगा. तो देखो, इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कलोड इज बीइंग शेयर्ड अमोंग द एम्प्लॉय, द फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज बीइंग प्रमोटेड. तो जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बटेगी वहां पे इफिशियंसी आएगी, क्योंकि एक डेडिकेटेड बंदा हमने पहले से अपॉइंट कर रखा है. डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होगा. रिलायंस डिजिटल को लेके वो आदमी पहले ही अपना प्रिपेयर रहेगा, साइन कर लेगा जो भी करना है उसको, और इससे आउटकम आगे आएगा. इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को प्रमोट देगा. वेरी सिंपल इट इज. अंबानी साहब मे नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, बट दिस बी पर्सन मे हैव सफिशिएंट टाइम. तो ये इसी के लिए अपॉइंटेड है, रिलायंस डिजिटल के लिए. तो दिस विल ही मे डू मोर थिंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये पूरा आपको लिखना है ब्रेक करके. एंड लास्ट कंक्लूजन कि delegation of authority enhances employee motivation and fostering responsibility and skill development. Next question,